As you know, the cotton textile, for example, cotton textile is an agro-based industry. As you know, the raw material required for the textile is cotton, as well as the jute textile is also a agro-based industry. Okay. And then when you look at the paper industry, apart from that, food processing industries. Food processing industries. Now, as you know, today the people also use the term fishery industries. So fisheries, as you know, is a allied activity in agriculture. Then dairy, industries, another industry which you clubbed under this head. Okay, so these are the industries. In this modern time, as you know, certain industries which needs the minerals also, the raw materials is the mineral, like automobile. As the urbanization increases and grow, there is a demand of automobile sector also grow. Okay. But now there are certain industries which is very dynamic in nature, depend on various new technologies as well as the raw materials, like IT industries. IT industries. Okay, there is a separate dynamic group of industries, as well as, say, the biotechnology based industries. So these are certain dynamic sectors. So there are various kind of, I will cover few ones. I will give you the ideas how to cover this topic. Okay, so important one I will cover. There are so many industries. So how I will cover this topic, say for example, which kind of a questions appear from this industry section. इसमें क्या क्वेश्चंस आएंगे, जैसे से अगर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के ऊपर क्वेश्चन है तो आप इसको कैसे कवर करोगे, ठीक है ना. सो इफ यू हैव टू कवर अ सिंगल इंडस्ट्री, देन हाउ you will cover. So let's understand the structure when you are covering a one topic, say for example iron and steel. I'm just giving you an idea what kind of a questions may be asked. Okay, iron and steel industry in India. In paper 1, those having the geography as a optional, world distribution of industry भी देखना है, little bit you should idea about
the distribution of industry at a global scale. But here I am discussing right now the Indian geography. So my focus is the distribution of iron and steel industries. So what kind of questions may appear? Basically, we have to develop the historical perspective of the growth of iron and steel industry in India. Say for example, where the first industrial setup begins in India, especially the iron and steel sector, how it grew. Then what is the government's plan? Is there any government plan to encourage such kind of industry? Is there any focus on the planning process? 5-year plan में कोई emphasis या focus था इसके ऊपर? Or what is the policy of the government? So you must keep in mind, is there any emphasis in the 5-year plan regarding the development of such an heavy industry, because iron and steel is a heavy industry? Okay, then what kind of questions may appear? Locational factors, where such kind of industry is located. Locational factors and distribution, because few questions appear about the distribution of iron and steel industry in India, and what are the factors which is responsible for the growth of such industry in a particular patch. एक खास एरिया में ये इंडस्ट्री क्यों ग्रो हो रहा है, क्या कारण है उसके, वो कारण देखने पड़ेंगे, वो फैक्टर्स देखना होगा. ठीक है, कि why the Tata has opened the industry in Jamshedpur, what are the reason behind it, why there is a steel plant in Burnpur, why in Vishakhapatnam. So you have to understand what are the reason behind that, what is the advantage of the location, is there any advantage of location, or the industry is solely depend on location only, or other factors are also there which is responsible for the growth of such industry in India. Then you have to just understand the role of public and private sector. Role of public and private sector in the growth of industry. So certain questions also appear on what is the share. Yesterday when I was discussing about the iron and steel, then I had said that 4 major companies having the largest market share. Jindal Steel, Tata, okay, SAIL. These are the industries having the larger share of the iron and steel. So you have to understand the role of the public, means the government enterprises as well as the private sector. Then what you have to here understand the recent policies or the recent investments or plan, if any, to encourage such industries. And this structure apply for almost all the industry. अगर यहीं पर कॉटन इंडस्ट्री आया तो उसका भी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, उसमें भी देखेंगे कि आज़ादी के बाद से अब तक गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी बनाया,
कहीं 5 ईयर प्लान में कुछ फोकस किया था क्या अर्लियर ड्यूरिंग द नेहरूवियन एरा और आफ्टर दैट, and what are the factor of location where they are located, okay, and why such countries industries are located in that region, whether the it is comes under the government, all the industries or private sector are also involved in that, means that industry is open for private or not, and what are the recent policy investment plan, okay, etc. क्या कहीं और खुले हैं नई इंडस्ट्री रिसेंट पास्ट में, खुले हैं तो किसका इन्वेस्टमेंट आया है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है या इंडिया से इन्वेस्टमेंट है, ऐसा कुछ मेजर जो न्यूज़ में रहता है उसे भी देखना होता है करेंट पर्सपेक्टिव में। उसके बाद आप पढ़ते हो इसमें जब भी इंडस्ट्रीज होते हैं तो उसके अंदर कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, challenges. So what are the challenges faced by the iron and steel industry? You must understand, उसको भी देखना होगा कि क्या challenges है। अब challenges है तो फिर ओवरकम भी करना होगा उसे और हमें सोचना होगा वे फॉरवर्ड भी। So this is the structure of this topic. Like that you have to cover all the industries. तो मैंने कहा कि there are so many industries which is in India right now. I'm not going to cover all the big and small industry. I will cover the larger industrial setup in India and larger industries. कुछ heavy industries cover करूँगा और heavy में mineral based भी, cotton based भी, sorry agro based भी, ठीक है, और कुछ डायनेमिक इंडस्ट्रीज जो मॉडर्न टाइम पीरियड में इवॉल्व हुए हैं उसके ऊपर भी कुछ डिस्कशन करूंगा। रेस्ट द टॉपिक यू हैव टू कवर एज पर द टाइम, जैसे जैसे चेंजेस आएंगे, बट आई विल गिव यू अ बेटर आइडिया व्हाई हाउ यू हैव टू कवर द टॉपिक। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सब्जेक्ट मैटर इंडस्ट्री। हियर आई केम विद अ क्वेश्चन, what is the meaning of the term industry? So basically this term is quite confusing. The term industry is quite confusing when the geographer started learning it. Why it is quite confusing? Because sometimes the peoples also use the word fishery industries, dairy industries, and when you look at the fisheries and dairy industries, the raw material is basically not the mineral, not the earth material. The raw material for the fishery industry is the fishes, and through which after processing we are creating different products and sell in the market. When we talk about dairy industries, the product, as you know, extracted from the animal, basically the milk, and after processing we had created several kind of milk products out of that. So once the people started thinking about the industry, always the mind moves towards the mineral. But as I have said, gradually once this subject matter started glorifying in geography, the geographer having the confusion. Later, the geographer, majority of geographer has defined industry. How he defined industry? Usually the geographer describes those activities in the secondary sector, okay, particularly concerned with manufacturing. So what the geographer stated that industries क्या हैं? जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रही। Industries describe the activities in the secondary sector, and already I had discussed with you people that when you started learning the sector in economy, there is a primary sector, and the primary sector provides the raw materials.
The primary sectors, as you know, having the agriculture and allied activity. Agriculture and allied activity. Mining. This activities provide the raw materials for the secondary sector of economy. In the secondary sector, when we talk about in economy, when you started learning about the secondary sector, so this raw material is required to run this sector. This raw material is developed by the primary sector of economy, and this raw material utilized by the secondary sectors, which is particularly concerned with manufacturing. So industries comes under the secondary sector of economy. Already I had finished the primary one. Already I had discussed the agriculture, the agricultural scenario in India. Already I had discussed all the important minerals, the mining activities and important mines of India. And now I am entering into the secondary sector, because industry comes under the secondary sector. Industrial डेवलपमेंट के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, और इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं. तो सेकेंडरी सेक्टर एंड द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, दिस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स need to sell in the market, and for that in economy another sector developed which we call tertiary sector. So the tertiary sector of economy includes services, trade and transport. Through the trade and transport, we lead the commercial activity and we started sale and purchase of the products which we develop. Okay. So that sector is also required, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट होने के बाद अगर वो मार्केट तक नहीं पहुंचता है, मार्केट से लोगों तक नहीं पहुंचता है, तो फिर इंडस्ट्रीज कोलैप्स हो जाएंगे. फायदा ही क्या है प्रोडक्ट बनाने का. और मॉडर्न टाइम पीरियड में एक और सेक्टर डेवलप हुआ, क्वार्टरनरी सेक्टर और क्वीनरी सेक्टर. क्वार्टरनरी सेक्टर्स एडवांस सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, these are the advanced services, comes under quaternary sector of economy. So what the geographer stated that according to geographer, what is industry? Industries is a kind of secondary economic activity in which what we manufacture certain products by using the raw materials which is provided by the primary sector of economy. So this is the definition of the term industry. That industry usually used by geographer to describe those activities in secondary sector and is particularly concerned with the manufacturing. Now the question is, what is manufacturing then? Again, it is a very vague and confusing term, manufacturing. I have mentioned here that now food processing में भी manufacturing हो रहा है, और ऑटोमोबाइल में कार भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, और आईटी इंडस्ट्रीज में कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, चिप्स भी बन रहे हैं.
So there are so many activities which comes under manufacturing. So since the term manufacturing also include many things, that's why it led to confusion. So there is a problem defining term. And then the UN, United Nations, has defined manufacturing. What is the definition given by the United Nations? I have mentioned here. According to United Nations, what is manufacturing? As the mechanical or chemical transformation. You did the physical transformation, physical basis से. If you take the raw material, उसको हथौड़े से तोड़ दिया. Physically it changed. You put the mechanical pressure, you pulverize that. आपने उसको पीस दिया, तोड़ दिया. तो ये mechanical transformation हो गया. आपने ताकत लगाई, mechanical forces, muscle forces, and you break it. Or otherwise you did the chemical reaction and you transform the property. So what happened in manufacturing? The mechanical or chemical transformation of inorganic or organic substance. Organic means the living one, okay, which we extracted from the living plant product is a living product. डेयरी इंडस्ट्री में दूध जो है वो ऑर्गेनिक है, लिविंग से लेके आ रहे हो, ठीक है, बट आयरन इज अ इनऑर्गेनिक, कॉपर इज एन इनऑर्गेनिक मटेरियल. Okay, so what is manufacturing? As the mechanical or chemical transformation of inorganic or organic substances into the new products. Okay, whether the work is performed by power driven machinery or by hand. Now say for example, when we talk about the हैंडलूम, आपने सुना है हैंडलूम? क्यों कहते हैं इसे हैंडलूम पता है आपको? क्योंकि हाथ से करते हैं, इसको हिंदी में हथकरघा कहते हैं. हैंडलूम इंडस्ट्रीज, तो हाथ से वहां वीविंग होती है, हाथ से बनाते हैं, है ना. लेकिन वही आपने पावर लूम भी सुना होगा, ठीक है. तो पावर लूम्स इंडस्ट्रीज की जब बात करोगे तो ये क्या है, यहाँ मशीन इन्वॉल्व, हाथ से वर्क नहीं हो रहे. तो दोनों बातें मैंने लिखी हैं कि ये जो वर्क इज परफॉर्म्ड बाय द पावर ड्रिवन मशीनरी और बाय हैंड. हु डिफाइन? द यूनाइटेड नेशन. वेदर इट इज डन इन अ फैक्ट्री और इन द वर्कर्स होम, ओके, एंड वेदर द प्रोडक्ट सोल्ड होलसेल और रिटेल. This is the wider definition of manufacturing. It is a very broad definition of manufacturing given by United Nations. So you must know, because as you people know what is manufacturing, कुछ बनता है. आप क्या लिखेंगे in a layman term? Some product has been created, but how that product has been created? What are the process involved? Who is the stakeholder in that? It may be created by machine, it may be created by man, it may be created in the factory, it may be created at the house. Household industries भी है ना, cottage industry भी है, family चला रही है. The family member when they run the industry known as cottage industries, a small group of people. Okay, so there are different kind of industry. I will also discuss classification, okay, based on the other. और आप वैसे भी पढ़ेंगे हैवी इंडस्ट्रीज, ओके, और स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर इंडस्ट्रीज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्री, मैं वो भी क्लासिफिकेशन आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है. तो ये था डेफिनेशन. मैंने यहाँ टर्म इंडस्ट्री एक्सप्लेन किया और टर्म मैन्युफैक्चरिंग एक्सप्लेन किया, एंड यू मस्ट कीप इन माइंड, डोंट स्लीप इन द क्लास, write down the definition when I am discussing, okay. And next, the measurement of the size of industry. Now on what basis we can say that one industry, okay, अगर हम साइज की बात करें, साइज ऑफ इंडस्ट्रीज, अभी अभी मैंने बताया है, some industries we called large industry, okay, or heavy industry, okay. Some industries we call say the medium
small. So how you classify, what are the criteria of measurement of the size? There are two. One is on the number of factories. Okay. If in any area, in any region, हम लोग इंडिया पढ़ रहे हैं, तो इंडिया में देखेंगे कि नंबर ऑफ फैक्ट्रीज कितने हैं. इससे इंडिया का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में आइडिया लगेगा रीजनल स्केल के ऊपर. ठीक है. इट इज रीजनल, इट इज बेस्ड ऑन द रीजनल अप्रोच. मेजरमेंट ऑफ साइज, नंबर ऑफ फैक्ट्री इन अ एरिया. इंडिया के अंदर अगर हम स्टेट लेवल पर जाएं तो फिर आप देख सकते हो कि इन विच स्टेट इज मोर इंडस्ट्रियलाइज्ड इन इंडिया and which state is less industrialized, depend on the number of factories. So number of factories के बेसिस पर भी आप बता सकते हैं कौन से एरियाज में ज़्यादा बड़े कॉम्प्लेक्सेस हैं. ठीक है. But the question is here, say for example I am considering a state, say okay, any states which is developed, say Gujarat, okay, say Jharkhand or Odisha or whatever be, Maharashtra, whatever be. When we are considering a number of factories, यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है? Say for example, I have considered a factory A of Gujarat. Okay, and I had considered the factory B of Gujarat. गुजरात के दो फैक्ट्री हमने देखे. नंबर ऑफ फैक्ट्रीज अगर आपने कंसिडर किया तो यहाँ तो दो हो गए. लेकिन तुमने क्या देखा कि इन द ए, से फॉर एग्जाम्पल 5,000 वर्कर्स एम्प्लॉयड, बट दिस नंबर बी हैविंग ओनली 50 वर्कर्स, दोज हु आर वर्किंग. तो इससे ये नहीं पता लग पाता है नंबर ऑफ फैक्ट्रीज से कि फैक्ट्री में का साइज कितना बड़ा है. दैट इंडिविजुअल फैक्ट्री हैविंग व्हाट साइज, how many products they are manufacturing. Obviously जहां 5,000 एम्प्लॉय रखा है तो जो प्रोडक्ट होगा वो बल्क में निकल रहा होगा. जहां 50 लोग काम कर रहे हैं ऑब्वियसली वहां प्रोडक्शन लेस होगा कंपैरेटिवली. अगर किसी पर्सन ने ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल को हायर किया है इसका मतलब उसका प्रोडक्शन का स्केल ज़्यादा हाई होगा. एक कॉमन सेंसिकल अप्रोच समझ में आता है. तो जब हम नंबर ऑफ फैक्ट्रीज के आधार पे फैक्ट्री को देखने की कोशिश करते हैं तो हमें एग्जैक्टली इसमें लिमिटेशन ये है कि हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता लग पाता है नंबर काउंट करने से. आप किसी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में गए, आपने फैक्ट्री देखा बाहर से कि देयर आर 10 फैक्ट्री, बट नंबर तो आपने काउंट कर लिया 10 है, बट किसी फैक्ट्री के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट बन रहे हैं और किसी में सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, किसी में हजारों एम्प्लॉय हैं और किसी में नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेस हैं. तो तुम कैसे आइडिया लगा सकते हो कि कौन सा इंडस्ट्रीज साइज में बड़ा है इंडिविजुअली और कौन सा छोटा है? ऑफ कोर्स हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बट ऐसा भी हो सकता है कि पावर लूम्स डेवलप करने से ऐसा नहीं है कि 20-25 हज़ार आदमी का काम केवल एक मशीन कर लेगा. वैसे रिप्लेसमेंट की बात, ऐसे भी होते हैं काम जहां पर कि वन मशीन हैज़ रिप्लेस सो मेनी पीपल, बट ऑफ कोर्स वेयर द नंबर ऑफ पीपल इज क्वाइट हाई इन नंबर, except few industry like IT and all, majority of industries having the largest number of employees, so it shows that the product will be higher in number or maybe per unit production is high. मान लो कहीं पे 50 लोग मिलके एक दिन में 10 प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन 5,000 लोग मिलकर वही प्रोडक्ट 500 की संख्या में बना रहे हैं. तो ये भी तो है कि नंबर ऑफ यूनिट्स विच इज प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री इज मच मोर इन नंबर. So basically when we are counting the number of factories in a particular area, the number of factories gives us ideas about in which part of the country having a larger industrial complexes, but it won't gives us idea about how many products are manufacturing in an industry, and it also won't gives us idea
whether that industry is heavy or the medium or a small, ये हमें नहीं पता लग पाता. So this is the limitation of this approach of the measurement of the size of a industry. तो अगर आप इस मेथड को अप्लाई करते हैं मेजरमेंट के लिए साइज ऑफ इंडस्ट्री, तो इससे आपको एक रीजन का तो पता लग जाएगा कि कितने फैक्ट्रीज हैं, वो इंडस्ट्रियल वेल डेवलप्ड या है कि नहीं रीजन. जैसे आप गुजरात जाओ तो देखोगे बहुत सारी फैक्ट्री हैं, बिहार जाओ तो नंबर ऑफ फैक्ट्रीज लेस. इससे ये तो आइडिया लग गया कि गुजरात हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड है, बिहार हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड नहीं है, ये तो क्लियर हो गया. लेकिन ये नहीं समझ आया कि गुजरात में कितनी हैवी इंडस्ट्री है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, किस तरह के प्रोडक्ट निकल रहे हैं, ठीक है ना, या यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो रहा है, ये नहीं आइडिया लग रहा है. ठीक है, अब आते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज.